Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to do our very first chapter, which is generations of computer. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है इन आर टुडेज वर्ल्ड जिसको हम यूज कर रहे हैं वो कितनी जनरेशन से होके गुजरा है. दैट मीन्स व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज जो हमारे कंप्यूटर ने फेस करी है टू गेट रेडी फॉर दिस मॉडर्न वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज इन अ development phase. So let's understand about different generations which our computer gone through in this chapter. Without wasting any further time, let's understand each and every topic of this chapter. The name of a chapter is Generations of Computers, and the topics which we will discuss are understand the basic history of computer devices, be able to identify different generations of computers, understand the key technological advancement in each generation. Now we have an amazing warm-up activity which is describe the given devices and guess which one is used for calculations. Discuss how both serve the same purpose but evolved over time. So as you can see in the picture, हमारा जो first device है वो है abacus and the second one is our computer. तो जो अबेकस है वो हमारा एक अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस है, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो एंशियंट टाइम्स में यूज किया जाता था फॉर कैलकुलेशन. तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर हमारे पास कुछ बीड्स होती हैं हर एक रॉड के अंदर जिनको हम एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते थे. लेकिन जो कंप्यूटर है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम सेम यही चीज कर सकते हैं, इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बट इन दोनों में से जो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है वो है कंप्यूटर. बिकॉज वो बहुत सारी जनरेशन से होके गया है, उसमें एडवांसमेंट्स हुई है, डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन अबिकस इज स्टिल लाइक दिस ओनली. अभी भी इसको यूज किया जाता है बट ये इसमें कोई हमने इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं करी, कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई कि जैसे यूज होता था वैसे ही यूज होता है बिकॉज इट इज जस्ट अ डिवाइस. लेकिन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इवोल्यूएशन हुआ है, जिसमें एडवांसमेंट हुआ. Now, let's understand the history of computers. So, people have always needed the way to keep track of numbers. This need led to the invention of many different calculators. मतलब स्टार्टिंग से जो ह्यूमन बींग्स थे उनको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ ना कुछ नंबर्स को कैलकुलेट करना, ट्रैक करने की नीड हमेशा से रही है. इस वजह से बहुत सारे कैलकुलेटर्स यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारे पास इन्वेंट हुए हैं. Starting with the abacus, the very first counting device, people developed clever tools and machines that eventually helped us create computers. यानी कि अर्ली टाइम्स में जो ह्यूमन बींग्स थे उनके पास कोई सच डिवाइस नहीं था टू कैलकुलेट समथिंग, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं बहुत क्लेवर होके दैट उन्होंने कुछ ऐसी चीजें डेवलप करी है जिनसे वो काउंट कर पाते थे. तो इस वजह से मशीन्स का यानी कि कंप्यूटर को इवेंचुअली क्रिएट करने का जो हेल्प हुआ, जो आइडिया हुआ, वो इन मशीन्स और टूल्स की वजह से हुआ. नाउ इम्पोर्टेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं. सबसे पहले आता है 3000 BC, दैट मीन्स द अबिकस. बहुत ज्यादा पुराना, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारे पास है अबिकस. अबिकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस और इसको इन्वेंट किया गया था चाइना में. द अबिकस इज अ वुडन फ्रेम, कि एक वुडन फ्रेम होता है जिसके अंदर बहुत सारी रॉड्स होती हैं और उन रॉड्स के अंदर बहुत सारी बीड्स होती हैं. तो नाउ द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. इस फ्रेम को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेवन एंड अर्थ. तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होती है हेवन बीड्स और नीचे वाला जो है वो है अर्दन बीड्स. नाउ रॉड्स इज इन हेवन हैव टू बीड्स ईच इन रॉड्स. यानी कि हेवन के अंदर जो रॉड्स है उसमें हर रॉड में दो दो बीड्स है और अर्थ के अंदर हर रॉड में फाइव फाइव बीड्स है. पीपल यूज करते हैं बेकोस को टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्कल्स एडिंग मशीन. इन 1642 एट द एज ऑफ 19 एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने पास्कल्स कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था. इसके अंदर गियर्स, व्हील्स और डायल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं. नंबर इज शोन ऑन द डिवाइस बाय मूविंग द व्हील्स. इट कुड एग्जीक्यूट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर सकता था. The gear principle was also applied to a number of mechanical calculators. A taximeter is an excellent illustration of a mechanical calculator. Do you know Pascaline was the first gear-driven calculator? नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबनीज कैलकुलेटर. 1671 में एक रीओन्ड जर्मन मैथमेटिशियन थे
लेबनीज जिन्होंने अपडेट किया पास्कल मशीन को टू क्रिएट लेबनीज कैलकुलेटर, एंड दिस वाज अ मैकेनिकल apparatus. In addition and subtraction, Lebesgue calculator जो था वो also perform कर सकता था multiplication, division and calculation of square roots. Now early IT inventors यानी कि अर्ली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेंटर्स जिन्होंने बहुत सारी हमारे पास आईटी टर्म्स में इन्वेंशंस किए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं चार्ल्स बेबेज, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है and is considered as the father of computers. In 1822 and 1833 उन्होंने क्रिएट किया functioning model of mechanical computer जिसका नेम था difference engine and the analytical engine respectively. 5 units comprised the analytical engine. Analytical engine के अंदर 5 units थी, input, output, store, mill and control. ये जो मशीन थी, मशीन फंक्शन लाइक कंटेम्पररी कंप्यूटर्स, इसने सर्व किया था फाउंडेशन फॉर ऑल द कंप्यूटर्स यूज्ड टुडे. द डेटा वाज स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड अ मिल वाज यूटिलाइज्ड एज द यूनिट ऑफ कैलकुलेशन. जो द यूनिट्स थी दे वर सुपरवाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट. Charles Babbage analytical engine was a conceptual design for the first programmable computer. Now, what was the first mechanical calculator called? तो जो हमारा first mechanical calculator था, so as we have studied in previously that the first mechanical calculator was Pascaline. Now, Augusta Ada Lovelace, Augusta Lovelace जो थी was a British mathematician and author. She is the most notable for her contributions to Charles Babbage analytical engine. तो जो सबसे ज्यादा जानी जाती है वो इसलिए जानी जाती है कि उन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था. शी इज रिगार्डेड द फर्स्ट प्रोग्रामर. इनको फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से इनको प्रपोज किया गया. स्टोरिंग बाइनरी डेटा यानी कि 0 and 1 एज अपोज्ड टू डेसिमल नंबर्स. Now, ADVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer, and it was an improved version of ENIAC. Now, Dr. Herman Hollerith, ये एक American statistician Herman Hollerith designed the tabulating machine. इन्होंने tabulating machine को डिजाइन किया था, and this device was able to read data, process it and produce the intended result. This machine received input by punched cards. These punched cards were used to record and keep information or data. In 1890s, the United States Census Bureau used punch cards. उन्होंने punch cards का use किया था and storing machines designed by Herman Hollerith. Now, generations of computer. हमारे कंप्यूटर की कौन कौन सी डिफरेंट जनरेशन हैं? इन कंप्यूटर्स अ चेंज इन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जनरेशन. कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है उसको उसकी जनरेशन बोला जाता है. ये इंक्लूड करता है चेंज इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अप द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. So till date there are totally 5 computer generations. Each generation has distinct characteristics. तो हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की वो है फ्रॉम 1940s to 1955. First generation of computers came into existence in 1940s and were being used till 1956. तो इन्होंने क्या यूज किया था? मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया था फॉर मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था फॉर स्विचेस, सर्किट्स एंड सीपीयू. So vacuum tubes look like electric bulb. They gave out a lot of heat. बहुत ज़्यादा heat produce करते थे and were used to fuse out frequently. Hence they were very costly. बहुत costly थे. Only very large organizations थी जो उसको afford कर सकती थी. Features क्या थे first generation computer के? That they were very big in size, almost the size of a room. They used vacuum tubes and required lot of electricity. They were slow and error prone. They gave out lots of heat, बहुत ज़्यादा heat produce करते थे and required air conditioner to absorb heat. इसके examples हैं ENIAC, ADVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 650. Do you know जो vacuum tubes थी? They look like electric bulbs. They gave out lot of heat and used to fuse out. Next हमारे पास आता है Mark 1. तो Howard H. Aiken designed Mark I in the year 1944, and this machine was huge, about 15 meters long
and the wires connecting the various parts of the machine were about 800 kilometers long. And this was fully automatic and more reliable than early electronic computer. एंड ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इन 1946 जॉन मॉचली एंड जे परस्पर एकर्ट ने डेवलप किया था इसको, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। द यूएस मिलिट्री स्पॉन्सर्ड द रिसर्च, दे नीडेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, उनको कैलकुलेटिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी फॉर राइटिंग artillery firing tables, and it was the first electronic general purpose computer. It had over 18,000 vacuum tubes and was 1,000 times faster than the Mark 1. Next is UNIVAC, which is Universal Automatic Computer, and was a computer milestone जिसको achieve किया गया था by Dr. Percival Eckert and Dr. John Moshley in 1951. It contained 5,200 vacuum tubes. UNIVAC was capable of handling both numerical and textual data. Now, second generation of computer was from 1956 to 1964, and the second generation transistors का use किया गया in the place of vacuum tube. तो जो फीचर्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के, दे आर स्मॉलर थे, फास्टर, लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इन्होंने मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया था फॉर मेमोरी एंड स्टोरेज, मोर एफिशिएंट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और इसके एग्जांपल्स हैं IBM 1401, IBM 350, RCA 501। Now, third generation of computers was from 1965 to 1975, एंड इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था, और जो साइज था इंटीग्रेटेड सर्किट का वो था अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच। इस जनरेशन के फीचर्स थे दैट स्मॉलर देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, एनहेंस स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, लेस कॉस्टली देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, एंड इसके एग्जांपल्स हैं IBM 360 series, IBM 370 series, Apple I and Altair. Now, the size of second generation computer was half of a room. Fourth generation computers थे from 1976 to 1989. These computers were used the VLSI यानी कि Very Large Scale Integration Technology. इस टेक्निक के अंदर 1000 जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्लेस किया जाता है इनटू अ सिंगल चिप, जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल एक पहली ऐसी कंपनी थी जिसने माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया था। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय IBM बिलोंग टू दिस जनरेशन। इसके फीचर्स हैं दैट कॉम्पैक्ट है, इजीली पोर्टेबल है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ये एक अच्छा नेटवर्क फॉर्म कर सकता है, लेस कॉस्टली होता है देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे IBM PC, HP 9000, Cray 1/2, Apple II, Apple Mac, other modern PCs, laptops and palm tops, etc. Now, next comes is our fifth generation of computers, which is from 1989 to present. तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो अभी भी एक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है। इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दे यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि चिप्स। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो इंटेंडेड है टू वर्क विद नेचुरल लैंग्वेज। मेन गोल जो है इस जनरेशन का वो है टू डेवलप कंप्यूटर्स जो एबल हो टू रिकॉग्नाइज वॉइस, इमेजेस, ग्राफ्स, and this would be able to solve highly complex programs including decision making and logical reasoning etc. इस जनरेशन के कुछ फीचर्स है जैसे ये यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू थिंक एंड प्रोवाइड रीजनिंग एबिलिटी, बहुत फास्ट है, स्मॉल है, चीपर है देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पैक हो सकती हैं एक सिंगल चिप में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन स्पीच, recognizing complex patterns and images. Now, overview of evolution of computer. फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया, साइज बहुत बड़ा था, स्लोअर थे वर्क करने में और एरर प्रोन थे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 एंड IBM 650। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स के प्लेस पे हमने यूज करने शुरू कर दिए ट्रांजिस्टर्स, जो उससे साइज में थोड़े छोटे हो गए, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, स्पीड थोड़ी फास्ट हुई एंड ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आने लग गए एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। एग्जांपल्स हैं IBM 1620 एंड UNIVAC 110। फिर आई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर्स को रिमूव करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लगाया, जहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट हो गई,
ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आने लग गए, स्मॉल हो गया साइज, लेस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर हुई, लेस मेंटेनेंस करी गई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसके एग्जांपल्स हैं पीडीपी, आईबीएम 370 और 168, टीडीसी 316। फोर्थ जनरेशन में हमने यूज करे माइक्रो प्रोसेसर्स। ये अफोर्डेबल थे, पोर्टेबल थे, रिलायबल थे एंड क्लाइमेटाइज्ड थे। इसके एग्जांपल्स है डीईसी 10, स्टार 1000 टू प्रेजेंट डे डिवाइसेस। फिफ्थ जनरेशन में एस एल एस आई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, यानी कि और एआई रोबोटिक्स का यूज किया गया। पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट मल्टीमीडिया फीचर्स प्रोवाइड हुए, मोर यूजर फ्रेंडली एंड चीपर। इसके एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन विच सेज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन दे रखे हैं, जहाँ पे आपको इनके पीरियड लिखना है, दैट किस पीरियड से किस पीरियड तक ये जनरेशन रही और उस जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई। जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स हुई, तो आप यहाँ वो लिखोगे। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। तो जिस जनरेशन का पीरियड और उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, दिस यू विल गोइंग टू फिल एट योर होम। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स आर व्हाट वी सी टुडे। मॉडर्न कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स है जो हम इन आर टुडेज वर्ल्ड उनको यूज कर रहे हैं। दे कम इन डिफरेंट साइजेस। पहले आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो इनको डिजाइन किया गया है टू फिट कंफर्टेबली ऑन टॉप ऑफ डेस्क। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स typically come with several units जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस connected and work as a single unit। लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप कंप्यूटर्स, ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो पोर्टेबल हैं, हम इनको इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी, जो वर्क करते हैं बैटरीज पे एंड दैट नीड टू बी चार्ज। टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स छोटे होते हैं साइज में देन द लैपटॉप। इनके अंदर टच स्क्रीन हमें मिल जाती है विद एप्लीकेशंस टू यूज। हाउएवर मोस्टली ये एज अ पर्सनल डिवाइस ही वर्क करते हैं। नाउ एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया है फॉर पर्टिकुलर पर्पस, जैसे एटीएम्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है इन द फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। केपेबल होता है ऑफ प्रोसेसिंग बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है। दे आर यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड फील्ड जो रिक्वायर करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, weather forecasting, etc. India's first supercomputer was Param 8000. Let's revise the chapter. Computing devices have evolved from simple tools like abacus to complex modern machines. Carl Babbage को हम father of computers भी बोलते हैं for his early computer designs. Computers are classified into 5 generations based on the technological advancement. Modern computers are much smaller, faster, and more affordable than the earlier computers. Now there is a timeline. मटेरियल्स आपको चाहिए एक लार्ज पेपर, बोर्ड, मार्कर, पिक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट जनरेशन, प्रिंट और लेट स्टूडेंट्स फाइंड। ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आप डिवाइड करना है स्टूडेंट्स को इनटू अ ग्रुप। ईच ग्रुप को एक टाइमलाइन क्रिएट करना है शोकेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। गिव देम इमेजेस और लेट देम फाइंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट जनरेशंस एंड have them add key features and dates to the timeline. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Which device marked the beginning of computing? So the device which has marked the beginning of computing is abacus. First generation computers used vacuum tubes. Famous mathematician जिसको father of computers बोला जाता है चार्ल्स बेबेज. Integrated circuits were used in third generation. Artificial intelligence is the key feature of fifth generation. Now let's do the match the following. First, this is of first generation. These chips are of fourth generation of computers. Pascaline is a mechanical calculator. This is the third generation and this is the second generation. Let's do fill in the blanks. D.D. Lovelace, D.D. Ada Lovelace is recognized as the first computer programmer. The next is the biggest originated in ancient times. The dash generation of computer used transistors. Second, dash are incredibly powerful computers used for scientific purpose. Supercomputers.
Modern computers are classified as digital computers. Next is true false. Vacuum tubes were smaller and more efficient than transistors. False. Supercomputers are very expensive and used for everyday tasks. False. Charles Babbage's machine was a precursor to modern computers. True. Fifth generation of computer is still under development. True. And abacus was an electronic calculating device. False. So students, this was your complete chapter about different generations of computer. I hope this chapter is clear to you. Do revise it again at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.